ताच्या पयलीं एज FDA आमचो जो प्रायमरी रोल आसा तो जावन आसा एनफोर्समेंट करप. म्हणजे आमकां अशें दिसता की एनफोर्समेंट केल्यारच जाल्यार सोल्युशन मेळचो ना. वी हॅव टू ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एड्युकेटिंग द वेंडर्स आनी तांकां ऑल्टरनेटिव्स दिवपाक. जर हे केमिकली रायपनिंग बंद जातलें जाल्यार वी हॅव टू गिव देम द ऑल्टरनेटिव्स आनी फिजिबल मेथड्स. सो हो आमचो प्रयत्न आसलेलो आनी फाटल्या लास्ट टायमी आमी मिटींग घेतलेली आनी विथ द कॉपरेशन ऑफ द मार्केटिंग बोर्ड एज वेल एज द वेंडर्स कमिटी आमी खूब सुदारप हांगा केल्ले आसा. आतां आमच्या हाती कसली वस्त लागली ती म्हणटा ही एनरायट. हो एक प्रायवेट प्रोडक्ट वीच इज डेवलप्ड बाय अ प्रायवेट कंपनी. बट द गूड थिंग हातून जें आसा की ताणें जे FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तांचो अप्रुवल घेवन एक सेफ प्रोडक्ट डेवलप केल्लो आसा वीच इज अ ब्लेंड ऑफ सम एडिबल स्टार्चीज. जसो ताणें खावनी दाखयलो सो इट इज नॉट अ केमिकल बट इट इज अ नॅचरल प्रोडक्ट वीच इज टेकन अ पेटंट. आनी ह्या प्रोडक्टान रायपनिंग जाता म्हणून असो तांचो एक क्लेम आसा. सो हाका लागून ही आमी आयज मिटींग घेतलेली आसा आनी ह्या मिटिंगाच्या थ्रू आमी वेंडरांक आपोवन तांकां सांगलेलें आसा की हो प्रोडक्ट तांणी यूज करचो आनी पळोवचो म्हणून तो चलता जाल्यार खरेंच तांकां डिजायर्ड रिजल्ट्स मेळटा जाल्यार आनी एक काम ऑन अ कॉमन प्लॅटफॉर्म. सो हो जर प्रोडक्ट चलता क्लिक जालो जाल्यार दे कॅन यूज इट आनी जे नॅचरल रायपनिंग जें आसा हें आमी प्रमोट करतले हातूंत. फ्रॉम लास्ट टायम टील टुडे आमी फाटल्या 2-3 फावटी येवन यार्डान विजीट केल्ले आसा. आमकां खूब इम्प्रुवमेंट दिसतलो आसा. जशें तांणी सांगलेलें आसा CCTV कॅमेरा घालप आनी नॅचरल मेथड यूज करप हेवूय एक इट्स अ गूड थिंग. सो बरें आसा तेवूय उलोवप आमी. सो हे एक शिस्त जी आसा ती आयिल्ली आसा. पूण आमी अशें म्हणलें आनी हें ताणें कंप्लिसंट जावचें न्हू. इट हॅज टू कंटिन्यू. सो हो एक एश्युरन्स आमकां ताणें दिवंक जाय आनी आमचे जे सर्विलन्स चॅक आसा हे चालूच उरतले. सेवरल अदर मेथड्स आर रायपनिंग चेंबर्स आसा. नॅचरल जे तोंड घालप रायपनिंग आसा आनी हो एक मेथड आसा. सो ताणें खंयचोय हो नॅचरल मेथड यूज करून रायपन करचो हीच आमची मेन आमकां एक अपील आसा. सर हो जो प्रोडक्ट पेटंटेड प्रोडक्ट. सो ताणें पेटंट घेतलेलो आसा. सो एक्झॅक्ट तेजे जे कितें कॅमिकल्स आसा ते म्हाका खबर ना. बट वॉट आय हॅव इन हँड इज आय हॅव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम दी FSSAI. सो FSSAI एक सायंटिफीक पॅनल आसता. सो कितेंय जर नवी प्रोडक्ट मार्केटान लॉन्च जातलो वीच इज अ इनोवेटीव प्रोडक्ट नॉवल प्रोडक्ट जाल्यार तो FSSAI धाडून ताका सायंटिफीक पॅनलाचो अप्रुवल लागता आनी तो अप्रुवल घेवपाक ताजेर डिटेल टेस्टींग हें सगळें जाता. सो हो अप्रुवल ताका मेळिल्लो आसा. सो जेन्ना आमी हो अप्रुवल पळयता जाल्यार आमकां आनी कांय दुसरी पळोवपाची गरज ना. आनी टू बी डबल शुअर ताणें हो प्रोडक्ट आयज काडून ही हॅज ऑल्सो कन्ज्यूम दॅट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट वीच इज वन वे बाय वीच इट इज एश्युरिंग अस दॅट इट इज अ सेफ प्रोडक्ट. सो हेचो कितें प्रोडक्ट? इट इज अ नॅचरल रायपनर. जो आसा म्हणजे इट्स अ सॅशे विथ सम एडिबल स्टार्चीज आनी हो सॅशे तर ताणें घातलो चेंबरान किंवा क्रेटीन घातलो जाल्यार जो नॅचरल रायपनिंग प्रोसेस आसा तो एनहेन्स जाता आनी फ्रूट रायपन जावन आमकां मेळटा. सो इन्स्टेड ऑफ जो हार्मफूल केमिकल जो पयलीं यूज जातालो इट इज अ ऑल्टरनेटीव टू द हार्मफूल केमिकल एज अ नॅचरल प्रोडक्ट. इट्स ऑल्टरनेटीव टू ऑल दी हार्मफूल केमिकल वीच वर बीइंग यूज्ड अर्लियर. या प्रोडक्टान आणि एक इन्ग्रेडियंट जो आमकां पळोवपाक इतलीन हो गॅस जो आसा इट इज अ गॅस वीच इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी फ्रूट. सो जेन्ना झाडार फ्रूट जर पिकता जाल्यार इट इज बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ इथलीन गॅस. इट्स अ नॅचरल गॅस. आतां फॉर द डायनॅमिक्स ऑफ सेल आनी फॉर द डायनॅमिक्स ऑफ ट्रेड पिकलेलो फ्रूट तांकां काडूंक मेळना. तांकां मातसो जो सेमी रायप जो आसा जो ऑलमोस्ट रायपनिंग स्टेजीर जो पावल्लो आसा तो फ्रूट काडचो पडटा फॉर ट्रान्सपोर्ट फॉर स्टोरेज. सो हाका लागून ते हाडून हांगा एक 2-3 दीस दवरून ताका ते फुडलो जो तेजो 25% जो रायप जाता तो फुडलो 75% तांकां हांगा चेंबरांनी करचो पडटा. दीस इज अ वर्ल्ड वायड हें कितें म्हणटा तो वे ऑफ डिलींग वीथ दीस प्रोडक्ट्स. सो हाका लागून हो क्वेश्चन येता आर्टिफिशियल रायपनिंग. सो जेन्ना हो प्रोडक्ट यूज केलो जेन्ना हो प्रोडक्ट यूज जालो जाल्यार जे नॅचरल जे रायपनिंग प्रोसेस आसा तो एनहेन्स करतलो आनी आमकां एक बरो सेफ फ्रूट खावंक मेळटलो. तरी जे फाटले आमचे जे एफर्ट्स आसा जाल्यार इट इज केमिकल रायपनिंग म्हाजेर अशें कॉन्फिडंटली सांगूंक जाता इज टोटली मिनिमल बिकॉज वी हॅव बीन ड्रॉईंग सॅम्पल्स वी हॅव केप्ट अ व्हेरी स्ट्रिक्ट वॉच. आनी ही म्हाजीच म्हणणी न्हू हें तुमी तांकांय जे आमचे मार्केटिंग बोर्ड आसा तांकां तुमी विचारलें तांचो होच मत आसतली. बट हे जे सस्टेन जावपाक जाय जरी तर हो नॅचरल रायपनिंग सस्टेन जावपाक जाय जाल्यार ताका आमी ऑल्टरनेटिव्स दिवंक जाय. म्हणून आमी आयज मीटिंग घेतलेली आसा टू गिव द इंट्रोड्यूस देम टू दीस प्रोडक्ट्स आनी वी आर एबल टू सस्टेन दीस वॉट एवर वी हॅव अचीव. फाल्यां आमी अचीव केलें आनी खंय ना खंय अशें मागीर मातसो लूप होल्स जावन परतें हें वायट आसा तें येवपाक उपकारना.
So that is why we are constantly, being in touch with these vendors and trying to minimize any what is the bad thing that is being done. आजची मिटींग जेन्ना वेंडर येयलेले तेंचो कसो रिस्पॉन्स कितें Vendors have taken it positively. Even in the last meeting, the vendors have shown their support. आणि आम्ही त्यांका एक समजणी दिल्ली आसा की बाबा फाल्यां तर ह्या मार्केटान सस्टेन जातलो जाल्यार दे हॅव टू स्टॉप दीस अँड दे हॅव ऑल्सो अंडरस्टूड दॅट दीस थिंग्स हॅव टू स्टॉप अँड मोर दॅन एनीथिंग इट इज हार्मफूल. लोकांक चड आमी तांकां सांगलें की तांकां चड हार्मफूल ते बिकॉज दे आर हँडलिंग केमिकल्स. They are the highest exposed. So we gave them that training that forget the people will get affected eventually, but they will get the highest exposure because they are dealing with these chemicals. So खंय ना खंय हे त्यांना त्यांच्या मतीन गेलं त्यांना दिसतंय की बाबा हे जे एफर्ट जे FDA करता जे आमचे गव्हर्नमेंट करता that it is having it is making some sense to them. So that is when they realize and they have stopped. So today what they have here is a very good solution. Again, it is an add-on where they can use this and make their work easier. So vendors have taken it positively. Now in the next maybe 1 or 2 weeks, they will start using this product and they will see feedback देऊन maybe कसो तो tweak करून जाता कसो त्यांच्या सिस्टम जो आसा ताका बसोवन कसो यूज करून जाता ते हेजेर काम करून हो प्रोडक्ट फुडें ते यूज करतले म्हणून आमकां आशा आसा. येस innovation ये चीज अपने को रिसर्च प्रोडक्ट है 6 years 2016 to 21 आफ्टर 21 कमर्शियलाइज कर दिए इसको मार्केट में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें. कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ गोवा को आया. इसमें ये चीज अपने नया बायोलॉजिकल सेफ प्रोडक्ट है. इसमें कोई केमिकल नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं. ये चीज में आपने को मैंगो के अलावा पपाया बनाना अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स है. ये चीज खाने से क्या पूरी अपने नर्व सिस्टम की वो बना देगी याद से कोई साइड इफेक्ट नहीं है. इसके बारे में आपने को पूरा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंडिया वाले रिकमेंडेशन साइंटिफिक रिकमेंडेशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर द्वारा सर्टिफाइड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी सर्टिफाइड और गवर्नमेंट का जो लैब्स सेफ्टी लैब्स कोई केमिकल नहीं है. और दूसरी बात अपनी गवर्नमेंट गोवा का जो है सो सपोर्ट की वजह से अपने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एपीए का यहाँ का गोवा का एपीए एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सपोर्ट की वजह से यहाँ पर आज ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अपने गोवा में अवेलेबिलिटी होने के लिए अपने मार्केट्स में और होलसेल में रिटेल में सब लोगों को ये पूरा बहुत अच्छा चीज़ हमने मार्केट में देने की कोशिश की. गोवा एफडीए ने अप्रूव किया है ये. गोवा अपने ऑल इंडिया का फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में साइंटिफिक पैनल ऑफ बाकी स्टेट में इस्तेमाल कर रहे हैं. इस्तेमाल कर रहे हैं. टेस्ट के बारे में अगर बोले तो कैसे है कि नेचुरल टेस्ट और ये यूज करने के बाद कैसा टेस्ट रहता है? इसमें क्या है सर एक्चुअली क्या रेगुलर अपने को झाड़ के ऊपर इतने डिजीज होते हैं नीचे फल निकल गिरता है. अपने अपने 80% अगर मैच्योर होने के बाद आम भी हो बनाना भी निकालने से क्या अपनी चीजें ये पूरी डालने के बाद उसमें फर्मेंटेशन होते ही मीठा बढ़ेगा 50 to 20%. ओके. और साथ साथ में इसका सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होगा. जो अगर आम अगर 70-80% मैच्योर होने के बाद निकाल के पकाने से अपने को अगर 5-6 दिन का उसका सेल्फ लाइफ रहने से अपने को 8-9 दिन रहेगा 2-3 दिन बढ़ के रहेगा. और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है. इसमें चीज भी अच्छा रहेगा खाने. इके वर्ष कशें आसले हे जे रायपनिंग मेथडा खातीर जे कितें लिक्वीड वापरी ते तांकां तेंचे सप्लायर बीन धाडून दिताले आनी हांकां तेजेर अभ्यास नासलो. तांकां खबर नासली की कितें हार्मफूल आनी कितें हें तें. आनी सदांच कशें आसलें तांकां दुसरें ऑप्शन नासलें. जेन्ना आमचे स्टार्टींग जे 3-4 years बॅक जेन्ना एफडीएन बीन तांकां सांगलें की वापरूं नाका म्हणून सो तेंचे कडेन ऑल्टरनेटीव नासलें. सो तेन्ना आमी तेंच्यांनी ट्रेडरांनी बोर्डा कडेन रिक्वेस्ट केलो की आमकां रायपनिंग चेंबर जाय म्हणून. आनी आतांचे आमचे जे सेक्रेटरी आसा जसो आमचो रायपनिंग चेंबर घातलो आमी तेन्ना भट्टी घालपाक अश्यो म्हणजे प्रत्येक शॉपार भट्टी घालपाक कोण होलसेलर आहा तांकां भट्टी घालपाक आमी परमिशन दिल्यो. सो जे करून आमकां तांकां ऑल्टरनेटीव दिलो
आणि आयच्या तारखेक कशें आसा मागीर हे तरी कंटिन्यू आमचे कशें ऑलमोस्ट 15 ट्रेडर्स आसा जे भायरसून दुसऱ्या स्टेटीनसून केळी हाडटात. येस. सो तेंकां आमी घेवन बसले आमी तेंकां खूप एक्सप्लेन केले सगळे केले वी ट्रायड आवर बेस्ट. सो तितून कशें 10-12 जाणां अग्री जाले भितरले 2-3 जाणां तरी उरलेले. सो तेंचेर सोल्युशन हाडपा खातीर आमी मागीर ट्रेडर त्या बाकीचे 10 ट्रेडरांनी कितें सांगलें की एक सोल्युशन इज कॅमेराज घालया. यार्डान ते इम्प्लिमेंट करपा खातीर तेंकां फोर्स केले. सो आतां ऑलमोस्ट सगळे शॉपांचेर कॅमेराज आसा. कॅमेराचो एक एडवांटेज जालो की खंय तरी एक भंय निर्माण जालो आणि वी हॅव पुट इन म्हणजे ट्रेडरांनी सांगलें की तो 24 आवर्स मागीर अर्द्या वर मदीं बंद आहे त्या टायमार उदीक कितें जर केलें Yes. इट शूड बी 24 आवर्स सर्कल. सो त्या हितून ते सर्वेलन्स ते चेक करपा खातीर सुद्दां आमी यार्डाक रिक्वेस्ट केलेली की तुमचो स्टाफ धाडा आनी तेंच्यांनी कॅमेरा चेक करून जाय. आतां लास्ट विकान 1-2 आयले इवन FDA टीम फाटले 1 म्हयन्यान 2-3 म्हणजे सायन आसा एज अ कस्टमर म्हणून आयले आनी तेंच्यांनी सॅम्पल्स घेवन गेले. ओके. बट तांकां तितूनय काय मेळोन ना बरी खबर आसा. सो आमचे म्हणजे आमच्या म्हापशेकारांक सांगूंक सोदता की ह्यो सगळो प्रयत्न आमच्या म्हापशाक सेफ दवरपाक आमच्या म्हापशेकारांक बरे फ्रुट्स मेळपा खातीर. म्हाजी भुरगीं आसा वेंडरांक कितें मेसेज कित्याक खंय ना खंय कितें करता बेगिना पिकोवंक जाय आमकां फायदो बेगिना जावंक जाय कस्टमर येवंक जाय ह्या कारणाक लागून फक्त वेंडरा पेक्षा हांव कस्टमरांक सुद्दां मागतलो की जेन्ना केळी बी मागोवंक येता तुमी कच्ची केळी मागान घरा कडेन 2 दिसांनी पिकूंक जाय. तुमकां रेडी टू यूज समथी घरा वयली समथी खावंक जाय त्या परिस्थितीन कित्याक तुमी केळी व्हरता. तुम्ही मागात ट्रेडरांकडे कच्ची केळी मागान की आमकां 2 दिसांनी पिकता जातली ती म्हणून. सो वेंडर्स विल बी फोर्स की असले आनी करपाचेच ना. जरी जर कोण जर करपाक सोदता आतां इवन हे मोस्टली केन्ना जाताले फेस्टिवलच्या टायमार Yes. आतां लहराची जात्रा धरा थंयसर केळीची मागवण खूब मदींच येता की थंयसून आमकां 5 टन केळी जाय 10 टन केळी जाय रिक्वायरमेंट. सो त्या टायमार तुम्ही थंयसून जर कच्ची केळी जर मागली इवन देवाक सुद्दां चडयनार बी कच्ची केळी घेवन वचा. बोडगिनी आतां एवरी संडे आमी पळयता केळीची राशी थंयसर कच्ची केळी व्हरून बोडगिनी दिवपाक सुरू करा 2 दिसांनी पिकतली भले सो आनी डावटूच ना. आणि मागीर प्रॉब्लेमच सॉल्व जालो न्ही. सो जेन्ना डिमांडूच नासलो पिके केळींचो सो हे आनी कितें पिकयतले. सो हे आमचे म्हापशेकारांकी आनी सगळे कंज्युमरांकी एक रिक्वेस्ट की मागताना तुम्ही कच्ची घरा कडेन 2 दीस व्हरानी. आधी आमच्या घरान सुद्दां जेन्ना आमच्या केळीचो घट जातालो आमी साकान दवरप तो चुनो लायताले भितून दवरप 2-3 दिसांनी 8 दिसांनी पिकतालो न्ही. सो तोच प्रोसिजर तुमी आमी कंटिन्यू व्हरतना मार्केटांसून कच्ची व्हरया आनी आमी. येस.